I'm talking about disease caused by virus. Viruses are very small microorganism, parasite, parasitic with living cell. Within living cell, they differ from bacteria in having only one kind of nucleic acid, either DNA or RNA. In lack of apparatus necessary for energy production and protein synthesis. तो वायरस को हम कह सकते हैं कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लिंक है, क्योंकि वायरस में कोई सेल नहीं होती है. इट ओनली कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए. या तो डीएनए होता है इसमें या आरएनए होता है, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते. और इसमें बस एक प्रोटीन कवरिंग होती है जिसे हम कैप्सोमियर या कैप्सिड के नाम से जानते हैं. अगर हम वायरस को चौक की तरह शीशी में भर के रखें तो वो कई सालों तक रखा रहेगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा और उसमें कोई एक्टिविटीज़ नहीं होगी. लेकिन जब इसे हम किसी लिविंग होस्ट पे छोड़ते हैं, फॉर एग्जांपल कोल्ड वायरस, तो वो आपकी सेल पे नोज़ की सेल पे अटैक करता है और फिर वहाँ से रिप्रोडक्शन शुरू करके आपको कोल्ड करता है. मतलब डिजीज़ कॉज कर सकते हैं वायरस जब उन्हें लिविंग होस्ट मिलता है तो. They do not reproduce by binary fission but by independent synthesis of their component parts are then assembled. They cause many acute and chronic disease in human beings. Some major disease caused by virus are just like common cold, dengue fever. Now I am talking about common cold. It is highly contagious viral infection, though common all the year round. It is more usual in winter months. The disease is caused by many different viruses. The frail and elderly babies and the very young and the patient who are obviously ill are at special risk. The virus affect the whole upper respiratory tract but not the lungs, producing a swollen, inflamed living of nose in a particular and also the throat and often the sinus and larynx. Mucus from the nose is loaded with virus and the air breathed, coughed or sneezed out by an infected person may infect other in the vicinity. So common cold is caused by rhinovirus single stranded plus strand naked RNA virus. Rhino means nose, which belongs to Picorna virus. Pico means a small group. The virus are transmitted through droplet nuclei, pharyngeal and nasal secretion. The familiar symptoms include headache, watery eyes, sneezing, excessive nasal secretion and cough. Adenovirus infection often are responsible for common cold. Adenoviral cold are disinfective because the fever is substantial and throat is very sore and cough is usually severe. Now I am talking about symptoms. Some common symptoms of common cold are nasal congestion and discharge, sore throat, headache and stuffy feeling in the front of the head, runny nose, dry and tickly cough, lack of appetite, भूख नहीं लगती, general feeling of lack of energy, tiredness, थकान फील होती है, hoarseness. Now I am talking about transmission of cold virus. Droplet resulting from cough or sneeze of an infected person and are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pen, book, cups, door knob, computer, keyboard or mouse, etc. and cause infection in a healthy person. Prevention and treatment: keep the patient's temperature down, take extra drinks, especially cold drink, to replace fluid being lost and to cool the body. Take painkillers in recommended dose. A linctus may ease irritating cough symptoms. Inhale, stream, extra sleep or rest is best assist recovery. Now I am talking about disease caused by virus. Viruses are very small microorganism, parasitic with living cell. Within living cell, they differ from bacteria in having only one kind of nucleic acid, either DNA or RNA.
इन लैक ऑफ एपरेटस नेसेसरी फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो वायरस को हम कह सकते हैं कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लिंक है, क्योंकि वायरस में कोई सेल नहीं होती है। इट ओनली कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए होता है इसमें या आरएनए होता है, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। और इसमें बस एक प्रोटीन कवरिंग होती है जिसे हम कैप्सोमियर या कैप्सिड के नाम से जानते हैं। अगर हम वायरस को चौक की तरह शीशी में भर के रखें तो वो कई सालों तक रखा रहेगा, उसमें कुछ नहीं बिगड़ेगा।